Welcome to PTL Computer Institute. So, as you know, I am Mukti, so the faculty of PTL. So, if you remember, I believe the last lecture was related to DOS commands. So, we started with internal commands. So, part of internal commands, I believe we completed, I think, date, time, then dir, right? Then md, cd double dot, right? Then CLS also, right, to clear the screen. Then we left with the copycon, like how we'll create the new file inside the directory. Okay, so let's start quickly. So I'll what I'll do, I'll just uh, try the practical first, then we'll explain what are the things how we need to write. Apart from that, we also discuss the syntax of the commands. Okay, so let's quickly start with the command. So first of all, just click on that Windows R. So before to that, let me make it just a minute. Make it to duplicate. Uh, okay. So what I did, I just I'm using the projector. So for that, my system and the projector need to be in the same screen sync. So I just created that duplicate for both the monitors. So let's quickly write some. Let's create some directory. Let's mkdir or md, anything, whatever you can use. Md, then name of the directory. I'm giving the directory, let's say, kind of PTL, our issue name. So it looks like solid there. I'm just going to use that cd PTL. You can use staff to get the all the direct subdirectories available in the users. So what I'll do, so I created, I'm now inside the PTL. And what I'll do, I'll just create the file. To create a file, what we can use the copy, then con. What else? We can provide the name of the file. So I'm doing like PTL underscore intro.txt. So if the file name is single word, then we can just write the name and the corresponding extension. Again, extension is not mandatory. If we not even provide, still fine. But if the name is having multiple words, I mean there is a space within the name, so what do we need to do? We need to put the name inside the double quote. Means, let's say I have this, okay, PTL space intro. ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଆଜିମ୍ କ'ଣ କରିବ? PTL is the name of the file and intro.txt is the another file. Okay, but our what we need the same name, the entire name is the name for my corresponding file. जो फाइल टा मु क्रिएट करिवि से फाइल रो नाम मु चाहूँ कोन PTL space intro, मान PTL intro is the my file name. So for that, what I'll do, I'll make it to double quote PTL space intro. Okay, then .txt. So inside the double quote, it will have the entire file name. Clear? Then click enter. Once I have entered, what I will do, if you see my cursor is blinking, that means it's expecting the input for what? For my file. What I will do, I'll just write some content of the content for my file. So welcome to PTL. I'm randomly writing something. Okay, welcome to PTL. Okay. Happy to have you all as my student. Okay, and you people are
very talented and very talented uh, and interested for or focus on your study. Okay, so that's it. So this is the content I need to be present in the PTL intro file. Okay, intro.txt. So what I'll do, once I have completed the content of the file, what can I do? I can just close the execution of the command. Command execution can close kora ho by pressing Ctrl plus C. So I just, if you see, the output is coming like one file copied. That means it's able to create the file with the corresponding content. Okay, so here if you see, this is what, this is the name of the file, name of file. What about this? This is my content of file the content data. Okay, so syntax. First of all, what is the use of copycon? Let's write copycon. Company use kara copycon. It is used to create the file. Okay, it will create a file with given name and contents. Okay, with given name and contents. Clear? Next, syntax. What it will do? First of all, I'm inside C columns class. Then what will do? Copycon, then file name, enter, then I'll write some content, then enter at last ctrl plus c. एति कर साला पर कौन करू से फाइल मोर क्रिएट हो आउटपुट फाइल वन फाइल कॉपीड हला एटा मोर आउटपुट दो वन फाइल कॉपीड ता माने कोन हला मोर गोटे फाइल मोर कोन हला क्रिएट हेई हला कोठी इन द सी ड्राइव. क्लियर? सो क्लियर है आउट कोन अछि थरो कॉपी कौन क्लियर. Next, what else? Once I have the file and the content is ready, then what I can do, I can just read the content. Okay, so file ta mu read karibi, content more asu ki nai ta mai command kono ha type. Very good. So the next command is type command. Okay, type. What is the use of type? Type is used to read the content from the file. File to जो content लिखा है जी ताको read करी केंदे मु using the type command. It is used to read the type command. It is used to read. It is used to read the content of the used to read the content of the file used to read the content of the file. That's it. Okay, next, syntax.
syntax. Okay, okay, type. What is the syntax? C colon slash. What else you can do? We can write type, then name of file. Okay, name of file. So what we will do? Okay, then example. What is example? Example C colon slash type. हम कौन कौन से फाइल क्रिएट करथिले पिटल इंट्रो ताल कौन करिया हमें जेतु डबल कोड उत्तर थिला ये मल्टीपल वर्ड्स अछि ताले सिंपली हम कौन करे डबल कोड उत्तर रखी मु ptl space intro dot txt enter. Okay, it's a count down our content of the file. Clear? So let's jump into system now. We'll see how it is working. Simply type then ptl intro.txt. Okay, so what I can do, just click on enter. Welcome to PTL. I am happy to have you all as my student. You people are very intelligent and focused on your study. Okay, so next हम कौन कर दिया PTL भीतर जो कौन अच्छी मोर ये फाइल मु क्रिएट कली सो फाइल अच्छी नहीं कि जानी कौन कमांड यूज करी मु ता पई लिस्ट ऑफ आइटम्स के दो पूरे डायरेक्टरी द लिस्ट ऑफ आइटम्स अच्छी कौन कौन अच्छी कि जानिया dir. वेरी गुड. तो हम कौन यूज करबा dir. dir तो कौन कला ये list.txt intro.txt mkp.txt then there is a sub directory that is ptl. Can sub directory कहली मु it लिखा is कौन dir. dir means it is a directory. जेहेतु एबे एटा गोटे आउट डायरेक्टरी भीतर अछि एटा हम कोन कहूची सब डायरेक्टरी. ओके, then it is the ptl intro.txt. it is a file. Why? Because there is a space, there is nothing written as a dir. dir किसी नाही माने एटा कोन गोटे तमरो फाइल तो dir लिखा है जी गोटे डायरेक्टरी से जेते आउट डायरेक्टरी भीतर अछि सेते हम कोन कहूची सब डायरेक्टरी. क्लियर? तो एटा हम कोन करथली ptl intro.txt एटा हम कोन करथली क्रिएट करथली तम कहूची ऊपर मु क्लियर करथली. तो देखियो रीड क्लेडा ptl intro.txt सेम जिन सामे रीड करथिले आ सेम टा अवेलेबल अछि कोडी मोर इनसाइड द ptl डायरेक्टरी एटा. ओके, आ केते से नै जी साइज मो केते अछि 117 बाइट्स 117 बाइट्स रे कोन करछि कंटेंट स्टोर करछि के तमरो फाइल. क्लियर? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट कोन कोन थला cls, right? cls. Next is cls. What is the use of cls? cls use of it is used to clear the output screen or the screen or command prompt. Command prompt वाला एटा से कौन करो क्लियर कर दो कि तमर cls and cls stands for clear. Stands for clear. Okay, syntax simply c colon slash जो भी थी मो कौन करी मु cls enter. What it will do? Output. It will clear the command prompt. कमांड prompt कौन करो से क्लियर कर दो. ओके,
Next, let's jump into system. CLS, then enter. What it will do? It just clear out the screen. Okay, what else? Next one कौन है? DL, delete the file. Before delete, we can use the copy. Okay, copy. So, okay. Next command is copy. Copy. Copy command करा हुआ. It will copy the specified file from one place to another place. ताले जो फाइल टा जो गोला प्रेजेंट कितना अगर रहेगा? गोटे या ना दिटा यार? दिटा यार रहेगा. Copy माने it present in the source as well as in the destination. जब move कोइले प्रेजेंट राव रहेगा नहीं. कोड रहो जाएंगे से केवल तुम्हारा destination में रहेगा. Okay? Copy. It will copy the given file to the desired destination. Okay, जोठु मु कॉपी करली सेठु कोन करिवो जोठी मु कॉपी करियर अछि से फाइल टा कोन हेजो कॉपी हेजो ता माने सोर्स रहबो दैट मींस इन सिंपल it will present in both the location, that is source path as well as destination path. दीटा आगे से रहेगा सोर्स रहेगा आगु रहेगा डेस्टिनेशन भी रहेगा. ओके, नेक्स्ट ठीक है. सीएलएस कर दो जी. Syntax. C:// okay, source path copy source path to destination path. कोठु कॉपी हबो कोठी को हबो. ओके, सोर्स पाथ हला कोठी मु करेंटली अछि, डेस्टिनेशन ला कोठी मोर जिवो. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. लेट्स से मु कोठी जेबे C:/user/PTL एठी मु अछि. ओके, तो तापर कोन अछि मोर PTL इंट्रो थिला ना, PTL intro.txt that will copy to एटा कोन मोर सोर्स पाथ. ओके, सिंपली फाइल नेम हे पारे नले एंटायर लोकेशन हे पारे कोडी मोर सोर्स पाथ अछि. एटा मो एंटायर फाइल माने एंटायर पाथ हे पारे नले कोन हे पारे सिंपली मोर फाइल नेम हे पारे काई कि एंटायर पाथ एठी काई देइनी मु काई ना मु एठी अछि से जगह अछि जोडी मो फाइल ता अछि सेठी मु अछि. जदी इन केस मो थांती कोडी यूजर्स भीतर थांती एटा मु कोन करथांती /user/ptl देन द ptl intro.txt रखथांती. जेतु मु से ता पेरेंट रो अछि जो जगह से अछि सेते मो कोन दरकार नै आउ पाथ मो दरकार नै हेला. ये एटा मोरला सोर्स पाथ सही होला. नेक्स्ट कोन अछि मोर डेस्टिनेशन पाथ कोठी मु कॉपी करबी. इफ यू रिमेंबर ptl भीतर आउट ptl थिला ना, तो मु सेठी कॉपी करबी स्लैश कोन देली ptl स्लैश एटा कोन होला मोर डेस्टिनेशन. ता माने ptl भीतर डो अछि ptl भीतर आउट ptl ता भीतर भी ptl intro.txt रहइबो. बुझियला. देन एंटर.
what will do, the output will be one file copy. गोटे फाइल में कौन है कॉपी है क्लियर एबे करो सिस्टम देखो ताको फास्ट देखो मोर कौन कंटेंट अछि डीआर देखो एटा स्मॉल पीटीएल अछि राइट देखा जानि परजो ना नहीं एटा गोटे डीआर अछि मोर पीटीएल वाले डीआर अछि एटा लाग दे जो ओके एटा मोर हला फाइल ptl intro.txt जोटा मु कॉपी करबी कोडी कॉपी करबी इनटू दिस डायरेक्टरी एटा हला मोर कोन डायरेक्टरी एटा हला dir एटा हला कोन मोर फाइल ए फाइल ता कॉपी हो कोठी की टू दिस डायरेक्टरी ओके तो कोन करियो मोडी /ptl ptl ला मोर कोन अछि स्मॉल अछि जनरल केस इनसेंसिटिव बेटा मान जदि मिलला ताकू ऑटोमेटिक नहीं जियो तक हला ओके हेला एते मोदली एबे कोन हबो मो जो पीटीएल रा इंट्रोडा ये पीटीएल थिवो आ ये पीटीएल भी थिवो दुटा पीटीएल थिवो एबे चेक करिया एग्जांपल copy then the name of the file ptl intro.txt कोडी कॉपी हबो /ptl ओके स्लैश एंटर तो कौन आसला मोर वन फाइल कॉपी गोटे फाइल मोर कॉपी हे गला तो कौन करिया एबे dir मारो फर्स्ट एट थिला ptl कर थिला अछि पडला ptl intro.txt अछि एबे कौन करिया हम कोड देखिया ये वाला ptl जो अछि या तो जिबा तार जे पुन चेक करिया चलो आगर फिर चेक करिया माने कौन करिया भितर जे कि जे कमांड कोन पूरा डायरेक्टरी तो जे कमांड कोन हां वो डायरेक्टरी भितर जी कमांड कोन दा dir cd very good cd then name of the directory ओके तो पळेल मु ptl नेक्स्ट ptl पळेली एबे कोन कर मु चेक कर कंटेंट केन चेक करिवे dir set ओके आई विल लीव आउट ptl थिला होता ना ओके स्मॉल ptl प्लस एंटर cd डबल डॉट कैपिटल अच्छी एठिन कौन कले कॉपी कौन ओके कौन को ऑलरेडी मोर अच्छी मु कौन कर रिप्लेस कर देली यस हला वन फाइल कॉपी एबे कौन करिया dir ptl okay ptl intro let's go into the directory I mean file explorer we'll see there at least c drive users user then ptl अछि केटी ptl okay ptl just copy the path okay then copy intro dot okay enter path one file copied एबे कौन करो cd ptl एबे dir हला ptl intro.txt एड को कर पारो जदी मु से लोकेशन ल अछि आइदर कौन करिवो ptl intro खाली दे दै तो नल नेम कोन जछि मु एंटायर नले पाथ दे परियो ओके कौन कौन कले एंटायर पाथ दे स्ली यूजर्स
यूजर देन पीटीएल दोट मो अछि स्लैश पीटीएल करी मु छाडली तो कोन हला मोर ए कंटेंट ना कोन हला कॉपी हला कोठी की तो सीडी पीटीएल करली पीटीएल भितर गली देन डीआर मारली मारला पर कोन अछि मोर जे पीटीएल इंट्रो डॉट टीएक्सटी अछि कॉपी हला ओके क्लियर कॉपी तो मूव करथान मो एडी मूव टा एक्सटर्नल कमांड हला स्टिल हम देखिबा मूव देखिया एक्सटर्नल कमांड पडला देखिया हला कॉपी क्लियर एबे कोन कल जोटा मु कॉपी करली ताको मु कोन करी डिलीट करी तो करेक्ट से भूल में कॉपी कर दे ताको मु डिलीट करबी तबे कोन यूज करबी del okay del next command del stands for delete okay delete it is used to delete what it will do it will use to delete the specified file delete the specified file okay delete the specified file clear जो फाइल मु देई जी से फाइल टा कोन करियो से डिलीट करियो के del कमांड सिंटैक्स c:/del then फाइल नेम और कौन करते हो तुम्हें del सहित कौन एंटायर लोकेशन भी दे पारियो तुम माने को जगह फाइल अछि इंक्लूडिंग द पाथ एंड द फाइल नेम दीटा तुम दे पारियो देन एंटर ओके नेक्स्ट व्हाट विल आउटपुट one file is deleted one file deleted clear तो ए मु कोड अछि सिस्टम में आसी हमें स्मॉल पीटीएल भीतर मु अछि एबे कोन करी मु एडू मु डिलीट करियो का को हम अछि कोन पीटीएल इंट्रो जोटा अछि तो कोन करिया हमें del स्पेस ptl intro dot txt जोठी कोन अछि मोर स्पेस कोन यूज करछि डबल कोड यूज करछि सेटा हबो माइंड रखिबो नले कोन हो फाइल तन पाइबोनी से डायरेक्ट खोजियो कोडा जे पन स्पेस पाइनी एटा खोजि ट्रीट करबो एज ए फाइल नेम खाली ptl खोजियो पाइबोन तम फाइल किछ नाही ptl नार खाली ptl ना कोन डायरेक्टरी अछि ताय तो तमे अछो लेकिन कोन देलु डबल कोड दो दूस del एंटर तो कोन हला सिंपली फाइल मोर डिलीट हे चेक केन करियो dir मोर अच्छे फाइल नहीं clear once the file is deleted what it will do you can write the dir command to check the content of the current directory okay current directory कौन करो तमे कंटेंट चेक करियो माने कंफर्म करिया फाइल टा डिलीट हेइ छि कि हेइ बुझला नेक्स्ट del क्लियर ओके हां जो dir रे आउट जिन से बाकी अछि dir रो सॉरी cd डबल डॉट देखो एठी कोन अछि ऑब्लिस अछि इंट्रो अछि एमकेपी अछि पीटीएल इंट्रो वगैरह वगैरह अछि ओके मु जानि मो फाइल ना कोन मु जानि मो एती मन अछि मो फाइल टा स्टार्ट हेतला फाइल नेम टा स्टार्ट हेतला कोडू फ्रॉम द ए कैरेक्टर ता पर कोन मु मोर मन नै तो कोन करी मु कैन सर्च करी दउ ताल कोन करी मु सेठी dir a then star what it will do it will dir a star means what मोर डायरेक्टरी भितर जत्ते सारा फाइल बा सब डायरेक्टरी अछि जो मन को ना स्टार्ट होछि ए रु ता पर केते अछि मोर किछ प्रॉब्लम नाही किंतु ए रु स्टार्ट हेतिबो से मानकर मु लिस्ट चाउस तो कोन करी मु सिंपली सेट में कोन दला ये केवल obelix.txt आसला काहे ए थरा मोर आ किछ नाही लेट्स सपोज मल्टीपल फाइल्स था स्टार्टिंग विथ ए ताल कोन करा से ताको भी शो करे थांता बुझियला
बट मु कौन चाहूँ मो मन अच्छे मोर फास्ट मन अच्छे लास्ट मन अच्छे मझे कौन लिखी मन ना ओके तो मुझे कौन करी सिंपली कौन करी मु डॉट डॉट टीएक्सटी तो माने फाइल नाम जहाँ भी हो कि मुझे एक्सटेंशन केवल जानी कौन मोर टीएक्सटी एक्सटेंशन तो मत कौन दरकार से गुड़ा फाइल दरकार जो मान एक्सटेंशन कौन है डॉट टीएक्सटी थी बुझीगला ओके तो ये जो स्टार कौन कहते वाइल्ड कैरेक्टर ओके तो वाइल्ड कैरेक्टर यूज केमी देबो इनसाइड योर डायरेक्टरी बा इनसाइड योर डॉस कमांड तो दुईटा वाइल्ड कैरेक्टर हम जनरल यूज करते गोटेला कौन अंडरस्कोर आउडेला तुमर स्टार है ना दुईटा करते स्टार मीन्स स्टार है कौन इंक्लूडिंग जीरो और ऑल जीरो ही पारे सब ही पारे किए स्टार अंडरस्कोर कौन कहबो एग्जैक्टली वन एग्जैक्टली वन मत गोटे दरकार जीरो दरकार नहीं कि सब मन दरकार नहीं अंडरस्कोर ला गोटे ओके तो एक यूज कर प्रैक्टिस करियो कौन तो वाइल्ड कैरेक्टर यूज करके हमें कौन यूज कर परिया सर्च कर परिया यूजिंग द कमांड्स दिया क्लियर ओके so I think today I cover a lot of things so if we continue with the remaining commands the video will be a little bit lengthy so let's stop with this and in the next lecture we'll continue the remaining commands and thank you for watching thanks a lot